every single day. I'm gonna make something. जय मसी सबैलाई अनि हाम्रो जो फायरबर्गको 27 को सङ्गति आज दिन सुरुवात भइरहेको छ। सो हाम्रो यहाँ भानुभवन, सो हामी यहाँ भानुभवनमा हामी बसिरहेको छौँ। सो हाम्रो यहाँ रेजिस्ट्रेसनहरू भइरहेको छ अनि हाम्रो यहाँ दादाहरू है भित्र नजानु भएको ए ओके ए हुन्छ हुन्छ ओके। सो हाम्रो भानुभवनमा हाम्रो सङ्गति स्टार्ट भइसकेको छ। सो तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो हाम्रो यहाँ आजको स्पिकरहरू यहाँ त हाम्रो रेजिस्ट्रेसन भइरहेको छ। जस्तै हाम्रो वर्कलाई ओके also with badges. Ali कम्ती भन्छ लाग्यो। 2, 3, come on! Hallelujah! 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 A blessed life. और आज मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि मैं एक आशीषित जीवन को जी रहा हूँ। Amen. And I just want to tell you, wherever you are listening, if you're hearing my voice, I just want to tell you that God has one will for you, and that is victory. आप जहाँ कहीं भी हैं मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की एक ही इच्छा है आपकी जिंदगी के लिए और वो ये है कि आप जय का जीवन जिए। Amen. Amen. Victory is the will of God for your life. परमेश्वर की इच्छा आपकी जिंदगी के लिए जय का जीवन है। Defeat does not bring him glory. हार परमेश्वर की महिमा नहीं करती। It's not his will that his children would live in defeat. ये परमेश्वर की इच्छा नहीं कि उसके बच्चे हार का जीवन जिए। 1 John 5:4 says, "Whatsoever is born of God overcomes this world." पहला यूहन्ना 5:4 वचन कहता है, जो कुछ परमेश्वर से जन्मा है वो इस दुनिया पर जय पाता है। Okay, whatsoever. जो कुछ भी। That doesn't mean it does not matter how old you are. इससे फर्क नहीं पड़ता आपकी उम्र कितनी You ज्यादा have है। gone to Bible college or not. आप बाइबल कॉलेज गए हैं या नहीं गए? If you are born of God, अगर आपने परमेश्वर से जन्म पाया, then world overcoming DNA is in your spirit man. तो दुनिया पर जय पाना आपके वजूद, आपकी बनावट में ही है। Amen. Like a fish gives birth to fish. जैसे एक मछली को जन्म देती है। Amen. Amen. Do you think the fish has to go for swimming classes? क्या आपको लगता है कि मछली को स्विमिंग सीखने जाना पड़ता है? No. नहीं। The day fish is born, fish knows how to swim because it's in the DNA of fish to swim. जिस दिन मछली पैदा होती है उसको पता है कैसे तैरना है पानी में, क्योंकि उसकी बनावट में ही तैरना है। Do you know God's name is victory? क्या आप जानते हैं परमेश्वर का नाम जय है? God has never seen defeat any day in his life. परमेश्वर ने अपने पूरे जीवन में कभी भी एक दिन हार नहीं देखी है। And the day we are born of God, the same DNA to live victorious is in our spirit man. और जिस दिन हमने परमेश्वर से जन्म पाया वही बनावट जय का जीवन जीने की हमारे अंदर आ गई। Amen. And God wants his children to live in victory. और परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे भी जय में जिए। That means you live in victory over sin.
इसका मतलब आप पाप के ऊपर जय में You जिए, live in victory over sickness, आप बीमारियों के ऊपर जय में जिए, over demons, दुष्ट आत्माओं के ऊपर जय में and जिए, over every works of darkness. और अंधकार के हर एक काम के ऊपर आप जय में जिए। But then if you see that scripture, it says, and this is the victory that overcomes the world, even our faith. लेकिन अगर आप उस आयत में आगे देखेंगे, उस वचन में तो लिखा है, और ये है वो जय जिससे हम दुनिया पर जय पाते हैं, हमारा विश्वास। That means if you don't understand faith, इसका मतलब अगर आप विश्वास को नहीं समझोगे, you cannot walk in victory. तो फिर आप जय में नहीं जी सकते। It is your faith ये आपका विश्वास ही that है empowers you to walk in victory. जो आपको क्षमता देता है, बल देता है कि आप जय में जिए। See, there are so many believers, they fast, they pray, they worship for hours, but they don't understand how faith operates, and that's why they're living a defeated life. बहुत सारे विश्वासी हैं जो उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, घंटों तक आराधना करते हैं और फिर हारा हुआ जीवन जीते हैं, क्योंकि वो नहीं समझते विश्वास क्या है। See, faith is not a topic. विश्वास एक विषय नहीं है, It's not a topic among many topics. वो बहुत सारे विषयों के बीच में एक विषय नहीं है। The Bible tells us बाइबल बताती है that we cannot be saved without faith. कि विश्वास के बिना हम उद्धार नहीं पा सकते। Ephesians 2:8 says, for it is by grace through faith that we are saved. इफिसियों 2:8 में लिखा है कि अनुग्रह के द्वारा विश्वास से। Okay? आमीन। Do you know that the Bible never says that fasting pleases God? क्या आप जानते हैं बाइबल कभी नहीं कहती कि उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता There है? is no scripture. एक भी आयत नहीं है। There were Sadducees and Pharisees fasting all the time. When Jesus saw them, he said, you are the children of the devil. सदूकी और फरीसी सारा समय उपवास करते थे, और जब यीशु ने उनको देखा तो कहा, शैतान के बच्चों, Anything that we are doing for God, if you remove faith out of it, it just becomes a religious obligation. जो कुछ हम परमेश्वर के लिए करते हैं, अगर उसमें से विश्वास हटा दिया तो वो सिर्फ एक धार्मिक काम है। Amen? Amen. So, just fasting is not enough. सिर्फ उपवास करना काफी नहीं है। Fasting with faith is what produces results. विश्वास के साथ उपवास करने से फल आता है। Amen? Praying is not enough. प्रार्थना करना काफी नहीं है। Everybody is praying. हर कोई प्रार्थना करता Then है, why is it that only some get results? तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ ही लोगों को उत्तर मिलता है? Some people say we are praying. लोग कहते हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। It's not prayer alone. सिर्फ प्रार्थना से नहीं होगा। It is the prayer of faith that brings results. विश्वास की प्रार्थना है जो परिणाम लाती है। Bible says in James 5:14 that it is the prayer of faith that shall save the sick. याकूब 5:14 में लिखा है कि विश्वास की प्रार्थना से जो बीमार है वो चंगा होता है। A prayer without faith is a religious duty. बिना विश्वास की प्रार्थना सिर्फ एक धार्मिक नौकरी है। But a prayer mixed with faith is powerful. लेकिन विश्वास से भरी हुई प्रार्थना शक्तिशाली है। Amen? आमीन। Even people can go to church Sunday after Sunday and hear a message. लोग संडे के बाद संडे कलीसिया जा सकते हैं और संदेश सुन सकते हैं। Hebrews chapter 4 tells us about Israelites. इब्रानी 4 हमें इजराइलियों के बारे में And बताता the Bible says that they heard the gospel like we hear the gospel today. है। और बाइबल कहती है कि इजराइलियों ने भी सुसमाचार सुना जैसे हमने सुसमाचार But सुना, it did not profit them because they did not mix it with faith. लेकिन उससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने उस सुसमाचार में विश्वास नहीं मिलाया। So you can come to church every day for all your life, and if you don't mix faith, the preaching will not benefit you at all. आप हर रोज जिंदगी भर कलीसिया आ सकते हो, लेकिन अगर उस प्रचार में विश्वास नहीं मिलाया तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। Jesus said, when I will come back, will I find what? Faith. और यीशु सवाल करते हैं कि जब मैं वापस आऊंगा तो क्या मुझे विश्वास मिलेगा? Amen? So we're going to learn how faith operates. इसलिए हम सीखेंगे कैसे विश्वास किसको। मेरे खिलाफ जब शत्रु के चलते थे, या जब दुश्मन ले आता मुझको बांधने जंजीर, तू ढाल बनकर मेरी करता हर एक तीर तबाह, तेरे नाम से ही हो जाता हर एक जंजीर का नाश। दुनिया में मुझे छू भी सके मेरे पास भी आए, जब तू है तो अनहोना, मैंने देखा परखा जान लिया, तुझको मैंने अपना मान लिया, तेरे बोझे हुए मुझे आज भी आया, तो मैंने आगे तेरे भाग लिया, ईमान भी तू चकरा भी तू, मेरा दिल और मेरी जान भी तू, तू मेरे दी जो जीत मुझे उस जश्न का ऐलान भी तू, मैं गाऊंगा चिल्लाऊंगा जी भर के खुशी मनाऊंगा, लहरों पे चलते कदमों के निशान तेरे मेरे शान भी तू, एक तेरा सर झुका
I pray तर आज मेरो प्रार्थना the यो Holy Spirit will break every lukewarmness तर तपाईँ अनि मेरो जीवनमा भएको सबै कुरो चाहिँ पवित्र and आत्माले His छोडेको। fresh fire will come upon you. अनि उहाँको ताजा आगो चाहिँ तपाईँमाथि आएको होस्। Amen. आमेन। Say it again. My time is now. तपाईँले भन्नुहोस् मेरो समय अहिले नै आएको छ। भन्नुहोस् त मेरो समय अहिले नै आएको छ। Amen. The Lord wants to move in this place. परमेश्वर यो जग्गामा मण्डलाउन चाहनुहुन्छ। Holy Spirit wants to impart anointings to so many people. आज पवित्र आत्माले हामी धेरैमा पवित्र आत्माको शक्तिलाई हाम्रो जीवनमा ल्याउन चाहनुहुन्छ। Holy Spirit wants to impart gifts into so many people. अनि धेरैमा पवित्र आत्माको वरदानहरू हामी भित्र उहाँले थोप्न चाहनुहुन्छ। He wants to give ministries to so many people. धेरै मानिसहरूलाई उहाँको सेवाकाई उहाँले प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ। If you're hungry, यदि तपाईँ भोको हुनुहुन्छ भने He will come towards you. तपाईँ प्रति उहाँ आउनुहुनेछ तपाईँ कहाँ। Because God will never force Himself on anyone who doesn't want Him. अनि परमेश्वरले चाहिँ कहिले पनि जबरजस्तीमा उहाँले काम गर्नुहुन्न। But if you're hungry, if you're thirsty, यदि तपाईँ तिर्खाएको र भोकाएको हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई Holy Spirit will be attracted towards you. अनि पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँतर्फ आकर्षण भएर And आउनुहुनेछ। today He's doing one thing. पवित्र आत्माले आजको दिन एउटा काम गर्नुहुनेछ। The finger of God is stirring some people's heart in this place wherever you are. अनि परमेश्वरको औँलाले तपाईँको धेरैको हृदयहरूलाई तपाईँलाई परिवर्तन गर्नुहुँदैछ। And if you're saying, Lord, I'm not satisfied with normal Christianity, अनि तपाईँले यदि भन्नुहुन्छ म यसरी साधारण विश्वासी मात्र भएर जिउनमा म तृप्त छुइनँ भन्नुहुन्छ भने I want to walk as my Father has designed me to walk. अनि जसरी मेरो पिताले स्वर्गीय पिताले मलाई बनाउनु भएको छ त्यो अनुसार म हिँड्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ। Amen. आमेन। Do not be satisfied with religious Christianity. अनि तपाईँ अनि म चाहिँ एउटा धर्मलाई पालन गर्ने मात्रै तृप्त हुने विश्वासी नबनौँ। God has so much more for you. परमेश्वरले तपाईँको लागि चाहिँ धेरै कुराहरू साँच्न भएको छ। You know, I was born in a very small village. म चाहिँ एउटा सानो गाउँमा जन्मेको You केटा can हो। call it a town now. अनि तपाईँले यसलाई एउटा सानो सहर भन्न सक्नुहुन्छ। And all my life, my mom was demonized. अनि मेरो आमा चाहिँ एउटा भूतात्माले ग्रसित भएको आमा थिए। And when I found Jesus, जब मैले येशूलाई पाएँ I said, Lord, what can you do with my life? अनि प्रभु तपाईँले मेरो जीवनबाट के गर्न चाहनुहुन्छ। I never had any friends in my life. मेरो जीवनमा असल मित्रहरू थिएन। Whenever I used to go to school, everyone used to mock me. अनि जति पनि म साथीहरूसँग त्यो स्कुलमा जान्थेँ तर उनीहरूदेखि म बाहिरी। One time my principal came into my class and she said, you can choose 5 friends. अनि मेरो अध्यापक आएर मलाई भने क्लासमा आएर तिमीले 5 जना तिम्रो मित्रहरू चुन। Everybody was chosen except me. अनि हरेकले मलाई चाहिँ छोडेर अरूले अरू साथीहरू मात्रै चुने। And my principal looked towards me and said, nobody wants you. अनि प्राध्यापकले मेरो प्रिन्सिपलले मलाई हेरेर भने सबैले आफ्नो आफ्नो 5 जना साथीहरू चुने के तिमीलाई कसैले चुनेन? And her words went into my heart. अनि एउटा शब्द मेरो हृदय भित्र गाडियो। That nobody wants me. कसैले पनि मलाई चाहँदैन रहेछ भन्ने कुरा। And maybe you feel like that. सायद हुन सक्छ तपाईँ पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ होला। मलाई कसैले मन पराउँदैन। मलाई कसैले There were चुन्दैन। boys in our class who were tall and strong, and my height was very small. अनि मेरो एउटा कद पनि सानो भएको कारणले हुन सक्छ सायद म त्यो क्लासको रुममा चाहिँ म सबैभन्दा सानो थिएँ। I was not good in sports. I was not good in studies. अनि म पढाइमा अनि म खेलकुदको क्षेत्रमा असल सायद नभएको कारण होला। And I always used to feel that nobody wants me. अनि मलाई चाहिँ यस्तो लाग्थ्यो मलाई कसैले पनि मन पराउँदैन चाहँदैन रहेछ। I have a good news for you. तर आज तपाईँको लागि एउटा If you feel like that nobody wants you, यदि तपाईँलाई यस्तो लाग्छ कसैले तपाईँलाई चाहँदैन मन पराउँदैन, Jesus wants you. येशूले तपाईँलाई चाहनुहुन्छ। And one day I was just worshiping the Lord in my room. एक दिन म मेरो कोठाभित्र बसेर येशूलाई आराधना गरिरहेको And Jesus walked into my room. अनि येशू ख्रीष्ट मेरो रुमभित्र हिँडेर आउन I just looked at His feet and I kept crying. अनि म येशूको त्यो पाउलाई हेरेर म रुन थालेँ। And I started like a TV screen. I started seeing that time when I started seeing that my classroom. अनि मैले चाहिँ त्यो मेरो एउटा येशू ख्रीष्टको खुट्टालाई हेर्दै गर्दा टिभीमा पिक्चर हेरेँ जस्तै मैले मेरो क्लासरुममा पहिला भएको त्यो घटनाहरूलाई देखिराखेको And the principal saying, nobody wants you. जुन कुरो मेरो प्राध्यापकले मलाई भनेको थियो तिमीलाई कसैले मन पराउँदैन भनेको कुरा। And then Jesus looked towards me and said, I want you. अनि येशू ख्रीष्टले त्यो दृश्यमा मलाई भन्नुभयो मलाई तिम्रो खाँचो छ।
The Bible says He has chosen the weak things of the world. अनि परमेश्वरको वचनले भन्छ परमेश्वरले हामी जस्तो कमजोरीहरूलाई चुन्नुभयो. He has chosen those who are rejected by the world. अनि जो चाहिँ संसारबाट बहिष्कार गरेको मानिसहरूलाई उहाँले चुन्नुभयो. But do you know why? तर किन चुन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ? Chose the weak things to confound those who call themselves strong. अनि आज त्यो व्यक्तिहरूको अगाडि तपाईँ एउटा गवाई बन्नलाई, जसले भन्छ हामी चाहिँ सक्रिय छौँ भन्ने व्यक्तिहरूको अगाडि प्रुभ गर्नलाई, एउटा दर्शाउनलाई तपाईँ There is so much more. त्यहाँनिर अझ धेरै कुराहरू छ. There is so much more. त्यहाँनिर अझ धेरै कुराहरू छ. No matter if you have done great things for Jesus, तपाईँले आज धेरै कुराहरू येशूको लागि सायद गर्नु भएको होला. I want to tell you there is so much more. तर आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँको लागि अझ धेरै छ. Don't get satisfied. तपाईँ चाहिँ तृप्त नबन्नुहोस्. Jesus wants to transform multitudes of lives through you. तपाईँको जीवनद्वारा धेरै मानिसहरूलाई येशूले परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ. Don't be like Israelites. तपाईँ चाहिँ इजरायली जस्तो नबन्नुहोस्. God wanted to take them to a land that was flowing with milk and honey, अनि परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई मह र त्यो दुध बग्ने देशमा लान चाहनुभएको. but on the way तर त्यो बाटोमा they हिँड्दै will see little water. त्यहाँनिर अलिकति केही पानीको मुहान They will गर्छ. see few trees. अनि अलिकति त्यहाँनिर केही रुखहरू देख्दा They will say, yes, this is our land of Canaan. अनि उसले चाहिँ भने यति नै होला हाम्रो लागि. No, what you have seen is just a little. तर यो तिमीले देखेको चाहिँ केही कुराहरू मात्र हुन्. There is great abundance waiting for you at the other side. त्यहाँनिर अझै प्रशस्तताको कुराले तिमीलाई पर्खिराखेको छ. Come on, tell your neighbor. तपाईँको छेउको साथीलाई भन्नुहोस्. Say, neighbor, तपाईँले भन्नुहोस् प्रिय मित्र, keep moving on. तपाईँ चाहिँ अघि बढ्दै जानुहोस्. Don't stop. भन्नुहोस् त, नथाकिनुहोस्. Don't stop. एकअर्कालाई हेर्नुहोस् त. भन्नुहोस् मेरो छिमेकी, तपाईँ अगाडि बढ्दै जानुहोस्. तपाईँको लागि अझ धेरै कुराहरू छ. Amen. Wherever you are right now, तपाईँ अहिले जहाँ पनि हुनुहुन्छ, it's not the last chapter of your story. तपाईँको कथाको अन्तिम भाग होइन. Your last chapter is still pending. तपाईँको अन्तिम भाग चाहिँ अझै छ. And can I tell you, the last chapter of your story is going to be glorious in Jesus' name. तपाईँको जीवनको अन्तिम च्याप्टर अझ महिमित भएर जानेछ. Amen. आमेन. God has not called us for ordinary. परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई एउटा साधारण मानिसको रूपमा मात्र बोलाएको होइन. We serve an extraordinary God. किनभने हामी चाहिँ यति अचम्म र हुँदैको परमेश्वरको सेवा गर्छौँ. Amen. Jesus with all your heart. Number 8, भन्ने तपाईले हृदयको तीव्र भनाइ गराउनुहोस्. 2, 3 गराउनुहोस् तपाईले यसको नाम. In the name of Jesus. It's not that time. Pastor, I've been suffering from something called irritable bowel syndrome since the last 4 years. And I've done all the tests, but every test shows normal. And I'm suffering so much with gastric problem. When I show the doctor tells me that this is just a problem that will remain for a lifelong time. And there is no cure in medical science for it. So I was suffering so horribly with that. And yesterday itself I did a USG and it was normal. So I just kept it in God that I'll be healed today. And I came. And in the morning when you were praying, the power of the Holy Spirit touched me and I knew inside me that I'm healed. And in the lunch they were serving us chicken biryani, right? That is something that is very, very poisonous for me for the last 4 years. But I had it with faith in God and nothing happened. बुझ्नु त सबैले उहाँको ग्यासको जेप्रै प्रब्लम थियो मेडिकल साइन्सको डक्टरले भन्थ्यो नि यो दबाईले पनि सायद हुँदैन यसको केही छैन तर युएससी हिजो मात्र उहाँले गर्नुभएको युएससीमा पनि केही छैन तर यो जुन आज बिरयानी हाम्रो यहाँ टिमले दिनुभयो बिरयानी चाहिँ उहाँको लागि पोइजन अरे तर आज त्यो बिरयानी खाएर पनि केही भएन परमेश्वर Come on, let's give him some glory. Amen.
अब फर्किने समय लागेको यतापट्टि चाहिँ हामी लागेको छौँ हामी 4 भाइ सो उतापट्टि छ हाम्रो दिदी बहिनीहरू फर्किनुको लागि आफ्नो हाम्रो बाटोमा छ निकु बेबी कहाँ गएको घर गएको मैले आनन्दलो र मेरो खरायो लिजा बाई तिमी दार्जिलिङ जान्छौ दार्जिलिङ जान्छौ दार्जिलिङ जाने अनि ओके बाई भेट्दै गरौँ भेटौँ नेक्स्टमा भेट्नुपर्छ अब फेरि ल बाई बाई निकु यहाँ हामी युवा मोर्चाहरू राहुल भाइ हिजोको सङ्गति कस्तो भयो यो मात्रै होइन मुखले हो आमोस हिजो सङ्गति कस्तो भयो दामी भाइ शक्तिशाली कार्य गर्नुभयो बस त्योभन्दा ठुलो के चाहियो हामीलाई होइन दान भाइ हिजो के कस्तो लाग्यो कतिको हार्डवर्क भयो हिजो किचन टीमा हिजो हाम्रो किचन टी पार्टहरू एकदम कडा गर्दैछ केटाहरू तर मान्नुपर्छ केटाहरूले कडा काम गरे हिजो बस